welcome back to my YouTube channel. Hope you guys are doing really good. और आज का एपिसोड है एपिसोड नंबर 2 फॉर सच पास ongoing series. This particular video was shot on 5th of October, but आज 14th है. It got delayed because वहाँ पे internet था नहीं, internet connection was really slow, so I could not upload any videos. ये वीडियो लेट हो रहा है बिकॉज आई कलेक्टेड ऑल द कंटेंट. वहाँ से सारा कंटेंट इकट्ठा करके आई केम बैक टू दिल्ली. बट एज सुन एज आई केम बैक ऑफिस स्टार्ट हो गया हमारा बिकॉज लॉकडाउन के बाद ऑफिस के अंदर थोड़ा वर्क प्रेशर ज़्यादा है, सो डिड नॉट गेट टाइम, सॉरी फॉर दैट. बट अब एज आई एम वर्किंग ऑन दोज वीडियोज़ नाइट टाइम आई वर्क ऑन देम, तो 1 या 2 दिन के अंदर आई एम प्लानिंग टू गेट इट अपलोडेड. जो एपिसोड नंबर 2 होगा, इन दैट एपिसोड वी वुड बी ट्रैवलिंग फ्रॉम मनाली टू किलर, विच इज़ 190 किलोमीटर्स का जर्नी है वो. और 190 किलोमीटर्स के अंदर ऑलमोस्ट 70 to 80 किलोमीटर्स इज़ कम्प्लीट ऑफ रोड. आप लोग बिलीव नहीं करोगे, वो ऐसा रास्ता है जिसके ऊपर आपको 1% भी टामैक नहीं मिलेगा. इट इज़ कम्प्लीटली ऑफ रोड. और हम लोगों की जर्नी जो है वो स्टार्ट होगी मनाली से लेके अटल टनल तक. देन वी विल गो टू उदयपुर में हम लोग लंच करेंगे, और लंच के बाद डायरेक्टली वी विल गो टू किलर, विच वुड बी आवर नेक्स्ट कैंपिंग स्पॉट. सो प्लीज़ एंजॉय द वीडियो. Hello guys, welcome back to this new episode, and we have started our journey from Manali towards Rohtang Pass and towards Killar, and we are gonna camp there. और वहाँ पे हमारे पोर्टर सर्विस जो है वो पहुँच गई है, एंड दे आर सेटिंग अप टेंट्स एंड एवरीथिंग. खाना भी वहीं पे होगा, एंड
वेदर हैज़ चेंज ड्रास्टिकली। आई मीन आई वुड से कि जो हमारा दिल्ली का वेदर है एंड यहाँ का वेदर है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिकॉज राइट नाउ वी आर जस्ट वेयरिंग वन लेयर एंड गोइंग फॉरवर्ड वी माइट नीड टू पुट इन मल्टीपल लेयर्स, जहाँ पे कि आप इनर भी पहनोगे, स्वेट शर्ट भी पहनोगे एंड देन यू वुड नीड ओवर जैकेट्स एज वेल। सो गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा. इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई वाज नॉट एबल टू शूट मच बिकॉज हमें ड्राइव भी करनी थी. तो ये जर्नी थी फ्रॉम मनाली टू किलर. इट वाज ऑल पिच डार्क प्लस डस्ट रेल्स बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे हर गाड़ी बिकॉज इट वाज अ कॉन्वॉय बेस्ड ट्रैवल. सो 14 गाड़ियाँ एक साथ चल रही थी और सारा डस्ट ही डस्ट था.
So we were not able to shoot anything at night. So we'll try to compensate in the next vlog, because next vlog is going to be from Killar towards Sajpas and way back. So I think उस vlog के अंदर हम कुछ justify कर पाएंगे, because it will be a day travel, 40 kilometers of travel, but it is going to take like 4.5 hours to reach there, because roads are really bad. You definitely need a SUV or a 4-wheel drive which has a capability of driving in those conditions. So अगर आप वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, so please make sure आप अच्छी गाड़ी लेके जाएं. अच्छी गाड़ी इज केपेबल गाड़ी लेके जाएं. प्लीज़ मेक श्योर आप कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को, और जितना लाइक करेंगे उतना ज़्यादा मोटिवेटेड फील करूँगा मैं, और आने वाले वीडियो में उतना ही ज़्यादा एफर्ट डालूंगा. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इससे भी बढ़िया वीडियोज़ लेकर आने की कोशिश करेंगे आपके सामने, और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कीप वॉचिंग ऑफ द लिस्ट. बाय.